Good afternoon, students. How are you all? Welcome to the fine Saturday and welcome to one more session from Infinity Learn. Very good afternoon. Hi, Moon Min Rathor. Wanga, hi, good afternoon. Me fine, thank you. How are you all doing? We are in NEET STEP UP 2025 program. My dear students from Infinity Learn by Sri Chaitanya, I am Suresh Sir, your faculty of chemistry. So in this NEET STEP UP 2025 program, we are dealing with physics, chemistry and biology. सारे के सारे पूरा topics we are going to discuss for free of cost, my dear students. So it starts from afternoon 12 o'clock to evening 6 o'clock. So get use of all these sessions. So we are giving a promise that we will finish the entire syllabus at the level of NEET examination. You make use of this and attend the sessions regularly. If you fail to attend the session on live session, you may please watch the recording of these sessions and you can ask doubts in the comment box. And not only you just watch it and you like, share and subscribe so that it can be useful for you and your friends as well. Hello, Rushan, how are you? Good afternoon. So in these chemistry sessions, in a week, we planned in such a way that first 3 days 11th syllabus and the next 3 days we are going to discuss about the 12th syllabus. In the course of Thursday, Friday, Saturday, we started haloalkanes and haloarenes. So what not, if you have any doubts you can ask. So before that I would like to ask you, my dear students, is my voice is clear? Just ek bar thumbs up maro session mein, right? Yes. Can you able to see me? And you can hear me, right? Okay, very good. अगर कुछ doubt है ना तो अभी पूछ सकते हैं. Waiting for the student to settle down in the session. Okay, Rushan beta, that's good. Thank you very much. Okay, what about Richa Sharma and Ishita? वो आने वाले हैं क्या ना? And they are the Saturday's fever. So don't rest. Don't rest. Only Sunday is resting. Okay, we are planning in such a way that we discuss these topics in the level of NEET examination. We are in the organic chemistry. We are going to discuss so many tricks and techniques in the organic chemistry. मेरा तरफ से सभी lectures आपको दे रहा हूँ आसानी तरीका क्वेश्चंस कैसे करना NEET examination में. Rushan, right? Simran Said, good afternoon. Waiting for you guys. Okay, अभी तक फिलहाल हम क्या पढ़ा चुका? So we started. Great. So बांचित करने हैं क्या आज का सेशन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? हैलोएरेन्स एंड हैलोअल्केन्स. हैलोअल्केन्स खत्म कर लिया ना, अभी हैलोएरेन्स देखना पड़ता है. एंड हैलोअल्केन्स में क्या चीज है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 देख लिया एंड एलिमिनेशन थोड़ा सा बचा हुआ. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स इन टुडेस क्लास. रीशा, वी आर वेटिंग फॉर यू. हेलो. सो कल का क्लास के हिसाब से कुछ डाउट है ना तो पूछना. रीशा, गुड आफ्टरनून बेटी. राइट. What about Ishita? So she, Richa and Ishita are the regular customers in this class. So right from day one, you people are attending. Many students are attending. More than 50 students are attending. Some students are visible on the chart box. Some students are not visible, but the list हमको दिखा देंगे. So those students who are watching everyday lecture, that's really appreciation from my side, right? Very good. So today a long lecture, haloalkanes and haloarenes. Today what we learned so far, we already completed classification of haloalkanes: primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide, benzyl halide and allyl halide, right? And vinyl halide and kind of things we did it, right? Ishita, we are waiting for you. Hello. And also we have seen methods of preparation, 1285. Irfan Patel, okay, NEET 552. Natasha, hello. Natasha, so I request you to join the sessions on a regular basis. Okay, I think it is good afternoon.
and this is your first session. Am I right? Am I right? This is your first session है, पहला session आपका. हाँ, right. Methods of preparation. We prepared from alkanes, free radical substitution reaction. Hello, Ansh. Okay, good, good, good. Very good. So nice gathering in initial time. So we'll go ahead with this. Methods of preparation of alkyl halides. We did it from alkanes by free radical substitution reactions, and alkenes you did it from Markovnikov and anti-Markovnikov, also allylic halogenation, right? And also from alcohols, anhydrous zinc chloride HCl, you can use HX, you can use PCl3, you can use PCl5, and thionyl chloride can also be used for preparation of haloalkanes from alcohols. Among all the methods we just discussed, Darjan's reaction, thionyl chloride is the best preferred method क्योंकि इसका side products जो आ रहा है ना HCl and SO2 वो गैस स्टेट में होना, सो हमारा जो अल्काइल क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं ना वो आइसोलेट करने का बहुत आसानी काम होगा, है ना नताशा? ये ग्रेड 12 का नीट एग्जामिनेशन का कर रहा हूं. ओके, राइट. So, and also halogen exchange reaction, alkyl iodides are prepared from Finkelstein reaction, alkyl fluorides are prepared from Schwarz reaction. याद है? So we discussed on the other day, right? That's fine. So these are the things we prepared, and also we got with chemical reactions of alkyl halides. उसमें nucleophilic substitution reactions SN1 कर लिया, SN2 भी कर लिया, and we are going to discuss the comparison between SN1 SN2. यहाँ से शुरू होगा आज का क्लास, and at the end I am going to give couple of tabular forms that can give the difference between SN1 SN2 competition में and E1 E2 भी competition में सब देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ. Get ready with your pen and book with you guys, right? 3 बजे तक चलेगा बेटा. Natasha? So every day my chemistry class Monday to Natasha, Monday to Saturday afternoon 1:30 to 3 o'clock, है ना Simran? Right. So we will be discussing some more concepts, more questions. Get ready, fun ahead, है ना? And you will be getting a sure short questions from my session. Okay, that is a promise I can give you from Infinity Land. This is your first class. I know that every student name in this class, I know it, right? That's good. Let's see, in this we will be discussing, we already discussed SN2 and SN1, and just what you are going to learn in today's class, the plan for today's class, elimination reaction and substitution. Elimination दोनों का बीच में क्या झगड़ा होगा, okay? And there is competitive between substitution and elimination, and haloarenes preparation बाद में properties of haloarenes, है ना बेटा? Right. So here I just want to discuss about SN2 and SN1. So let us talk about SN2, a short recapture, because this is already completed. This is short recapture SN2 reaction. Substitution, fluid friction. This is physics related question, okay? We discussed this in the physics class. Oh, you want me to teach physics? We can schedule physics classes a अलग platform पे करना. Yeah, Natasha, let it be. Of course, you are a fresher, ये भी काम चलेगा बेटा, right? So SN2, substitution nucleophilic bimolecular reaction, उसमें एक alkyl halide जो है, this is alkyl halide. Alkyl halide में this is a halogen, है ना? मान लो ये halogen chlorine होगा, है ना? ये chlorine होगा, ये chlorine leaving group है ना? So that we can say R1 group, R2 group, R3 group. So when it is reacted with a nucleophile, nucleophile is going to attack. आगे से काटने का मुश्किल है क्योंकि लीविंग ग्रुप इस तरफ बाहर निकालना है, so that पीछे से काटने का कोशिश करता है. So whenever it goes like this,
so that nucleophile is going to make a bond, trying to make a bond, and ये क्लोरीन जो है ना यहाँ से निकालने के कोशिश कर रहे हैं, so that आपका मिलेगा जो products R1 and R2 and R3 here. This is actually not a real thing, it is called a transition state. Okay, this is what you call it as a transition state. This is a transition state, बाहर isolate नहीं कर सकते. So ये imaginary hypothetical है ना, right? Day physics class, okay? Physics class भी होना है. I think physics class का time 12 बजे को, और in the description box you have been given telegram channel. Okay, you just join in that. क्या क्या क्लास कब कब होगा, क्लास का सभी अपडेट्स ये टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा. फाइन बेटा, राइट. सो दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा ना, so that this is going to leave from here. So as a result of this you are going to get a product like this. So nucleophile, carbon, R1, R2 and R3. ठीक है. सो क्या क्या चीज इसका इंपॉर्टेंट है. पहला जो है ये वन स्टेप रिएक्शन. सो यहां से यहां तक एक स्टेप है, यहां से यहां तक वो दूसरा स्टेप है. ऐसे सोचना गलत बात है. यहां से यहां तक एक ही स्टेप है, बीच में हम इमेजिन कर रहा हूं. सो ये स्टेप रियल स्टेप नहीं है. So this is an hypothetical. So this is one step. So इसमें rate of the reaction is equal to K alkyl halide, जो substrate है ना alkyl halide मान लो, and ये nucleophile concentration में भी depend करता. So that order of the reaction is sum of these powers is called order. इसका 2. So a bimolecular reaction. See? So these SN2 SN1 कल कर लिया. So for you a short recapture आपको दे रहा हूं, है ना, right? It's a bimolecular reaction. इसमें क्या हो रहा है? Transition state is formed as an intermediate, and this is also stereochemistry. मान लो ये वाला R, ये वाला S होगा. Let it be dextrorotatory, ये levorotatory होगा. So this is what you call it as complete stereochemical inversion. That is what Walden inversion. Walden inversion takes place. So एक चीज है, whenever you see SN2, this slide should come to your mind, है ना? Right बेटा. Okay, 4:30 physics class रीचा. Okay, 4:30 को फिजिक्स क्लास होता है. यस आई नो इट. बाद 4:30 to 6. यस 3 to 4:30 आई थिंक जूलॉजी और बॉटनी क्लास और सम बायो क्लासेस इसी तरह, राइट. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो इन द वाल्डन इन्वर्शन, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई जस्ट वांट टू से, वीक न्यूक्लियोफाइल, strong nucleophile favors SN2. Strong nucleophile favor SN2. Whenever SN2 comes now, these points should strike in your mind. Polar, aprotic solvent favor SN2. Okay, and reactivity आपका आएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन टर्शियरी अल्काइल. बस इतना ही है, बस इतना ही है. सो 1 2 3 4 5 6 7 ये एक शॉर्ट रिकैप्चर में आपका पूरा की पूरा SN2 मिल गया, है ना बेटा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. इसको ऊपर नहीं चाहिए. जब आप एग्जाम को जा रहे हैं ना, उसी समय में पहले सुबह ये स्लाइड आपका चीट शीट में रखना है, एक बार देखना है. सो एक बार रिवाइज करके एग्जाम के जाके आराम से एग्जाम लिख के आना है. सिमरन, दैट्स गुड.
सो दैट इज द मेथड, दैट इज द स्टाइल, आपका आदत रखना पड़ता है। हर एग्जामिनेशन में कुछ प्रिपेयर करने का तरीका होता है ना। सो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन है। ये प्रिपरेशन में ऐसे चीट शीट, स्लाइड्स और पेपर यू नीड टू मेंटेन योर डायरी, राइट राइट। आप आना चाहता हो क्या अंजू? सो हैदराबाद इन्फिनिटी लर्न कॉर्पोरेट ऑफिस। सो एक दिन मिलेगा सब लोग एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद। ओके, वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट SN1। सो SN1 जो है इट इज सिंपल, SN1 के ऑपोजिट नहीं होगा, कम से कम ऑपोजिट दिखेगा, राइट शायद। वेरी गुड। सो कीप अपडेटेड इन द चैट बॉक्स। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो सीधा पूछना चैट बॉक्स में, हर क्वेश्चन का आपका ऑनर कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी द सेम एंड यू सी द डिफरेंस बिटवीन SN1 and SN2, कार्बन and halogen, and it is R1 and R2 and R3. So R1, R2, R3, मान लो कोई alkyl group होगा। So when this particular reaction is started with a solvent, so you see the previous one, SN2 में न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, है ना। अभी SN1 में आपका आएगा सॉल्वेंट, ये रिएक्शन शुरू करना है, सो दैट सॉल्वेंट इज गोइंग टू टेक दिस हैलोजन आउट। सो सॉल्वेंट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन SN1। SN2 में सॉल्वेंट का रोल बिल्कुल नहीं होगा, राइट। सो क्लोरीन निकलने के बाद क्या होगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन। दिस कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यस, R1, R2 and R3, sp2 hybridized। अगर कार्बन इज sp2 hybridized, ऋचा शर्मा कार्बोकैटायन का शेप क्या होगा? रुशन, कार्बोकैटायन का शेप क्या होगा? इसका होगा, कार्बोकैटायन हमेशा ट्रायंगुलर प्लानर भी है। सो इसका पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनियम आयन बोल सकते, कार्बोकैटायन भी बोल सकते। सो दिस कार्बन it is having a vacant p orbital perpendicular to the triangle, right? Yes, Simran, you said it's triangle, appreciated. Now this is the carbocation and this is the carbocation formation, it's an intermediate formation। हर organic chemical reaction में ये चीज याद रखना, formation of an intermediate is always a slow step and it is a rate determining step। a rate determining step का मतलब क्या, ये जिस रिएक्शन का स्पीड है ना, ये स्टेप में डिपेंड करता है। सो सम रिएक्शंस आर स्पीड, सम रिएक्शंस आर स्लो। सो कितना स्पीड जा रहा है, काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज डिसाइडेड इन दिस स्टेप, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जहां पर RDS होगा ये हमेशा स्लो होगा, है ना। Now the nucleophile comes into the mind. Perfect. The nucleophile comes into the mind. So nucleophile, ये planar system जो है ना, this is your planar system. This planar system का nucleophile यहां से काट सकते, यहां से भी काट सकते। So that there are two chances of attacking of the nucleophile। यहां से काटना है, आगे से और पीछे से भी काट सकते। So that nucleophile is going to attack to give the product here R1, R2 and R3। जहां पर nucleophile पीछे से काटा हुआ ना, so this is the product। Wherever nucleophile attacks from this front side na, you are going to get the product like this। So you can see the difference between these two। मान लो a leaving group right side of the structure, so that the product, the nucleophile is right side of the structure, है ना। So this is a plus होगा तो ये भी प्लस आइसोमर होगा,
and this is going to be negative or minus isomer. Plus means dextrorotatory, minus means a levorotatory. Understand, my dear students? So that plus become a plus. So this is what you call retention. Retention of stereochemical configuration, plus become minus. So this is what you call it as inversion. So you can see SN2, you can see Walden inversion is seen, but in SN1 you have seen inversion as well as retention. So that is a Yudhvir Singh, yes, and both inversion and retention takes place in SN1 reaction, right? So and this mixture you can say racemic mixture. Formation of racemic mixture you can say racemization. Equal amounts of plus and minus isomers or equal amounts, equal moles of dextro and levo isomer mixture is known as racemic mixture, and formation of this racemic mixture is called racemization. Yudhvir Singh, okay, Roshan, Richa, Ishita, Hal, Simran, Syed, you all understanding this concept. It's an outstanding concept I want to give you. Here, just let us talk. This is two-step reaction. Two-step reaction. है ना? यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक और एक स्टेप है, एंड मान लो दिस इज स्लो. पहला जो स्टेप है ना, दैट इज स्लो. बाद में जो स्टेप है ना, ये फास्ट. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरमीडिएट हमेशा फास्ट होगा. सो दिस इज ए फास्ट स्टेप, राइट? सो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है. सो यू नीड टू नो द कंपैरिजन बिटवीन SN1 and SN2 and the competition between substitution and elimination as well, right, my dear students? If you read the organic chemistry in that way, you don't have any kind of confusions and all, or otherwise you struck up somewhere and you apply the same logic in everywhere, there lies your problems. So you don't invite your own problems. So this is the simplest way, and this is the simplest slide, you can save it. So a two-step procedure है, and ये जो rate of the reaction is equal to K, and this rate decided यहाँ तक है. So उसमें सिर्फ आपका alkyl halide है, so उसमें न्यूक्लियोफाइल है नहीं. सो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर डिपेंडेंट है. सो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो दैट न्यूक्लियोफाइल हटा दो ऐसे, सो दैट ऑर्डर इज गोइंग टू बी 1 एंड इट इज यूनिमॉलिक्यूलर. इट इज काइनेटिक्स के हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 क्यों लिखा? इट इज यूनिमॉलिक्यूलर. रिचा, फाइन फाइन बेटा, अगर कुछ डाउट है ना तो पूछना. दैट्स वेरी गुड. इट इज टू स्टेप रिएक्शन. यहां पर जो इंटरमीडिएट है, क्या इंटरमीडिएट है? कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट. सो कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट. कार्बोकैटायन के एक तकलीफ है. अब बोलना क्या तकलीफ है कार्बोकैटायन का? जहां पर चांस है ये रीअरेंज कर सकते हैं. सो लेसर स्टेबल कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज टू गिव द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. Very good, Richard. That's good. That's good. Nice interaction, right? So you already know the order of stability of carbocation. It's decided based on resonance and hyperconjugation. If you want to know the order of stability of carbocation का एक special session ले लिया मैं general organic chemistry में. You can re-watch and the replay of the YouTube sessions on general organic chemistry so that you can get it right. So Simran, so it can rearrange, and here solvent is starting the reaction. So here polar protic solvent favors SN1. So जो सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. वाटर, अमोनिया, ethyl alcohol, methyl alcohol kind of things comes in this wine, right? So
once the carbocation is formed with a positive charge ना, so that nucleophile आराम से आके काट सकते हैं. So nucleophile need not be that strong. So weak nucleophile favor SN1 reaction. Now I just want to say here reactivity, इससे ऊपर tertiary alkyl halide, secondary alkyl halide is more than primary alkyl halide. Primary alkyl halide it is unlikely. So जब आपका SN1 आ रहा है ना, SN1 reactivity is directly proportional to, you can take stability of carbocation. यही है मंत्र है. SN1 जब हैंडल कर रहे हैं ना, सिर्फ ये देखना बस, GOC is the backbone. Got it? Then what about SN2 sir? SN2 को भी एक मंत्र है. So that is SN2 reactivity is directly proportional to 1 by steric hindrance. Steric hindrance बस. जहां पर बल्कि ग्रुप होगा ना, वहां पर SN2 का रिएक्टिविटी कम होगा. हर्ष क्या बोलना चाहता हूं? Okay, don't spam in the class. This is a NEET STEP UP 2025 program. So the students, hundreds of students, every day we are joining with the eminent professors from the Infinity Learn. We are doing the best for the society, and the students are also nicely cooperating and doing their hard work. So इतना मेहनत कर रहे हैं दोनों तरफ से, उसमें स्पैमिंग मत करना बेटा, है ना. हर्ष, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. लेट्स सी. सो उसमें एलिमिनेशन क्या, जब सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें एलिमिनेशन भी होता है. ओके, वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. आई जस्ट वांट टू गो विथ एन एलिमिनेशन नाउ. Comparison between SN1 SN2 at the end of the session we will discuss this also. When you want to compare, अगर ये रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन जा रहा है ना, लेकिन SN1 जा रहा है और SN2 जा रहा है, सो ये कंपेयर करने का पहले जो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देखना, एंड यू कैन आल्सो सी द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, दूसरा बात है. सो यू कैन सी द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल पहले दिया है इस स्लाइड में. सो SN1 favored by the weak nucleophile, SN2 is favored by the strong nucleophile. SN2 is favored by the strong nucleophile. एक ही वर्ड आपका दिमाग में रखना है ना. राइट इशिता बेटी, फाइन. ओके, सो ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी कल का जो क्लास में दिया गया. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे पता चलेगा? Nucleophilicity means the strength of the nucleophile. So strength of the nucleophile, जिस डोनर एटम जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए. ये न्यूक्लियोफाइल है क्या? ये न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज, एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है, काटना है. So when it attack the positive charge of carbon, it donate the electron. So इलेक्ट्रॉन देने का संभावना ज्यादा होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन खींचने का संभावना होगा, बट इलेक्ट्रॉन देने का संभावना. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू electronegativity of the donor atom. You can see sulfur, iodine, carbon and fluorine का electronegativity ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है. सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है. ये सिंपल ट्रिक हम दे रहे हैं ना, ये ट्रिक इस्तेमाल करो. ओके, डोंट गो लाइक रट्टा मारो, ऐसे नहीं होगा. कौन याद करना पूरा? आर यू गेटिंग और नॉट? यस रुशान, फाइन, दैट्स गुड, नाइस बेटा. सो एक बार ख्याल में रखो कि जस्ट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ इट. 1 minute प्लीज. सेटिस्फाइड. आपका शुभ नाम क्या? सो विल डू क्वेश्चंस आल्सो. बिल्कुल करेंगे बेटा. So let's talk about effect of substrate. Okay, so the one which substrate forms a stable carbocation forms SN1 easily, and the substrate has less sterically hindered follows SN2 easily, right? So substrate
SN1 के लिए टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, उसमें प्राइमरी का कम और लेस रिएक्टिव देन मिथाइल. मिथाइल हैलाइड्स आर अनलाइकली. हाय सनी बेटा, okay, change your name. Richa Sharma, right, so that it forms a reverse way for SN2. एक चीज ख्याल में रखो, for both SN1 and SN2 के लिए benzyl halide is greater than allyl halide. This is very very important, very very important. So दोनों के ये ग्रेटर देन होता है, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लिया, फाइन बेटा. सो यहां पर क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट, स्टे ट्यून्ड. एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट प्लेस ए लीस्ट रोल इन डिसाइड वेदर SN1 एंड SN2. फॉर SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर SN2 के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, right. Polar protic solvent, you can say polar protic solvent, and this is what you call it as a polar aprotic solvent. इसका एग्जांपल्स कौन देगा? रीचा आप दे सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल. पानी, ओके, मिथाइल अल्कोहल और Ne अल्कोहल, ओके, अमोनिया, you can take methyl amine or ethyl amine or dimethyl amine, acetic acid, HF, acetic acid, okay, very good. कौन दे रहा है यहाँ पे? Okay, very good, इशिता, good, great, God bless you. Next, and इसका कौन देंगे? So polar aprotic solvent का एसीटोन, एसीटोन फिंकेलस्टीन में आ रहे हैं ना, that is RCl plus NaI in the presence of acetone gives rise Ri plus NaI, right? Very good. NaCl at last. Dimethyl sulfoxide, dimethyl sulfide, dimethyl formamide, okay, many solvents are there. Simran, right? वेरी गुड. एंड आपका जो सॉल्वेंट देखने का आपका पता चलेगा SN2 है, SN1 है. यस यस यस, इट इज करेक्ट. यस इट इज करेक्ट. ओके, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री. SN1 में बोथ रेसिमाइजेशन, इन्वर्शन एंड रिटेंशन टेकिंग प्लेस. क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. Chloroform is not used in these nucleophilic reactions. Dichloromethane can be used. Okay, so okay, and SN2 stereochemistry, complete inversion. So this is what you call it as Walden inversion. Okay, SN1 में देखना inversion भी है, retention भी है and racemization भी है. तीन चीज है. When we will do atomic structure beta, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड. मंडे को और एक बार बोर एटॉमिक थ्योरी करके क्वांटम मैकेनिक्स करना चाहता हूं. सो यू प्लीज डोंट मिस मंडे क्लास. मंडे वी आर प्लानिंग टू टॉक अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एंड इफ यू वांट मी टू रिवाइज बोर्स एटॉमिक थ्योरी आई विल डू इट फॉर यू. इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? यस. सो रीअरेंजमेंट. सो कार्बोकेटाइन जहां पर आ रहा है ना, उसमें रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है. सो सिर्फ SN1 में रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, SN2 में नहीं हो रहे हैं. ओके, दैट्स अबाउट SN1, SN2. लेट्स टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ दीज रिएक्शंस. वी डिड इट. Examples for the nucleophilic substitution reaction, ambident nucleophiles, Williamson synthesis. I just want to give the overall picture about the nucleophilic substitution reaction. Still we are in the revision program. That's what exactly happened in yesterday's class, है ना? Yes. Now this is the total scenario of the nucleophilic substitution reaction with the chemical reactions. So when alkyl halide, कैसे देखना ये टेबल का. So पहला वाला जो
alkyl chloride is reacting with any one of the reagent like sodium hydroxide or potassium hydroxide मान लो, ओके. सो आपका प्रोडक्ट जब आएगा alkyl alcohol बाई साइड प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड, ये रिएक्शन में आपका होगा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस. सब रिएक्शंस आपको दे चुका. फाइन बेटा, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस. सो ए reagent and this is a nucleophile and this is a substitution product. So the reactant is going to be alkyl chloride. So it reacts to give this. Okay, H2O nucleophile क्या होगा? Lone pair of electron is there and oxygen, right? Yes, very good. Now this is ether, thiol, iodide, amine, cyanide, isocyanide. So these are ambidentate nucleophile. We discussed about what is ambidentate nucleophile also. So Ishita, you tell me what is ambidentate nucleophile? What is ambidentate nucleophile? A nucleophile has more than one donor atom is called ambidentate nucleophile. Cyanide, nitro, like that. So this is one, KNO2 gives rise substitution product nitrool and AgNO2. So lithium aluminum hydride. We are going to see the reaction with the metals as well. Elimination reaction means you have seen in the alkene preparation. So removal of, when haloalkene is treated with a base, alcoholic potassium hydroxide, this is a base. Okay, they undergo dehydrohalogenation to form alkene. So these reactions are called beta eliminations. What is beta elimination? My dear children, here you can see carbon, this is a chlorine, this is a hydrogen. It could be anything. When a base is taken, you just see this is partially negative charge and this is partially positive charge due to induct effect. This is also positive charge. So a base means you can say it is OH minus, it is a base. Base is the one which love H plus. Nucleophile is the one which love carbon plus. So this is the best method, I can say. You can memorize it so that this is the base, love H plus, so that ये पकड़ के H2O निकल जाएगा, so that a bond is shifting here, chlorine भी निकल जाएगा, so that the product you are going to get carbon, यहाँ से हाइड्रोजन चले गया, so a bond यहाँ से यहाँ तक आना है, so that carbon chlorine निकल गया. This is alkene. समझ में आ रही क्या? This is alkene. Are you getting or not? So जिस कार्बन से एक क्लोरीन निकल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. इसका बगल वाला जो कार्बन है ये बीटा कार्बन होगा. सो लीविंग ग्रुप से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहे, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज बीटा एलिमिनेशन. So 99% reactions, elimination reactions are beta eliminations. Okay, alpha eliminations are so energetically costly, इसका डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होता है. So लेकिन बीटा एलिमिनेशन का ऑफ कोर्स दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा जी इज नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस होगा. सो you can see the among substitution nucleophilic reactions, of course elimination reactions, halogen iodide, iodides are more reactive than bromides, are more reactive than chlorides. Fluorides usually do not react because the bond between carbon to fluorine is so strong. समझ में आ रही क्या? So tertiary alkyl halides
undergo elimination most successfully. So the reactivity here, I just want to say here, okay, reactivity, elimination reactivity here for elimination, okay, tertiary is greater than secondary is greater than primary, okay, and they have to follow Sergev rule, and you can see this is an alkyl halide. So this carbon is called alpha, this carbon is called beta, this carbon is called beta. अगर ये अल्फा कार्बन एटम से ये ब्रोमीन निकल गए तो अल्कोहल के वो से रिएक्ट होने के बाद ये बीटा हाइड्रोजन निकलने के ये दोनों का बीच में डबल बॉन्ड आना है. So if that is the case, this is the alkene that is formed. Don't look at this. If the beta carbon this loses a hydrogen, ये दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड आने की संभावना है. सो देर आर टू चांसेस. सो दीज टू चांसेस उसमें ये मेजर होगा 81%. एक्सपेरिमेंटल डाटा का हिसाब से ये 81% प्रोडक्ट, ये वाला 19% प्रोडक्ट. क्यों? मतलब ये वाला माइनर होगा, ये वाला मेजर होगा, मेजर होगा, है ना. ये रूल कौन देगा? सो ये रूल है आपका Sergev rule. This is what you call it as Sergev rule. So Sergev rule or Sergev rule you can say. So Sergev rule बोल रहे हैं कि आपका whenever elimination takes place, the product formed is more substituted alkene. So more stable alkene. अरे फिर भी stability of alkene आ रहे हैं ना, 2 बार बता चुका मैं. सो आल्किन प्रॉपर्टीज में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो आल्किन स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय इशिता. अब बोलना, आल्किन स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय रीचा शर्मा. हु इज गोइंग टू डिसाइड द आल्किन स्टेबिलिटी? सुरेश सर है? नहीं. ओके, सो मेनी लेक्चर्स. आपका कितना, आपका जितना लेक्चर चाहिए उतना ले सकते हैं आप. इशिता, रीचा शर्मा, आप बोलना, alkene stability is decided by which electronic factor? हाइपर कॉन्जुगेशन. सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन का एक लेक्चर आपको बना दिया मैं. सो इट इज देयर इन द जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माय प्रीवियस वीडियोस. एक बार रिव्यू करो, है ना. एक बार लाइक भी करना यार, एक बार लाइक भी कर सकते हैं ना. एक बार सब एक थम्स अप फायरी इमोजी डालना चार्ट में. अरे सेशन में जोश कहा गया, हाइपर कॉन्जुगेशन. वेरी गुड, वेरी गुड, फाइन, राइट. रीचा, थैंक यू. इशिता, और क्या? हाइपर कंजंक्शन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन. इशिता, yes it is. Okay, talking about so elimination reaction. Now agar yes, when alkyl halide is treated with potassium hydroxide, so elimination भी होगा और substitution भी होगा. एक चीज है इसका पहले, हाँ, elimination versus substitution. So I just want to say, when you see here CH3 CH2 Cl, 100% ये स्लाइड का आपका काम आ जाएगा. 100% ख्याल में रखो. अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल के, एक्वियस बोलना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में डिसॉल्व करके थोड़ा सा गर्म करना. सो जब आपका एक्वियस बेस आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? ये जो चीज है ये निकाल के ये वाला सब्स्टिट्यूट करो.
बस. So it is going to be CH3 and CH2. सब्स्टिट्यूट करना, ये खींच के निकालना, ये होच लगाना है. सो दिस इज द प्रोडक्ट. समझे? राइट. नाउ आपका अल्कोहल में थोड़ा हीट कर रहे हैं ना, उसी समय में एलिमिनेशन हो रहा है. एलिमिनेशन हो रहा का मतलब क्या? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. क्या डिफॉरेस्टेशन है क्या? कट द ट्री. Halo, cut halogen and hydrogen. So that is what you call it as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Yes. So sir ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन ख्याल में रखना. सो डिहाइड्रोजन काटना, हैलोजन भी काटना. कहां से? ये कार्बन से हैलोजन काटना. इसका बगल वाला जो कार्बन है बीटा है ना, सो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा. सो दिस इज द बीटा एलिमिनेशन. आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सो दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 alkene मिलेगा. यू सी, दिस इज द वन रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या फर्क पड़ता है दोनों का? उसमें पानी इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर अल्कोहल इस्तेमाल किया गया. उसमें सब्स्टिट्यूशन बनेगा, उसमें एलिमिनेशन बनेगा. ये चीज ज्यादा काम आ जाएगा आपका. That's good, fine, my dear students, great. Understand? Very good. Now here, not only potassium hydroxide, जहां पर elimination चल रहे हैं ना, you can see any base, you can say sodium hydroxide इस्तेमाल करो. Okay, alcohol दिखाई दे रही क्या? ये कलर दिखाई दे रहे. और दूसरा कलर चलो. ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल है ना. सो व्हेन यू सी सर दीज मेनी रिएक्शंस, दीज मेनी रिएजेंट्स, कैसे याद रखना है सर? आई एम टेलिंग यू ना, एनीथिंग यू कैन यूज. समटाइम्स यू कैन यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड C2H5OK, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड, ओके, और टेरिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम टेरिशरी ब्यूटॉक्साइड. पोटेशियम टेरिशरी ब्यूटॉक्साइड. टेरिशरी ब्यूटॉक्साइड इसका पोटेशियम सॉल्ट है. सो वेन एवर दीज थिंग्स कम्स ऑन टू द माइंड, इट कम्स टू बी, इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन. और एक चीज है जहां पर एलिमिनेशन जा रहा है ना, उसमें हॉफमैन रूल भी इस्तेमाल कर रहे हो. सो सेडजेफ का ऑपोजिट है अल्किन. यू जस्ट रिवाइज इट वंस, यू विल गेट इट. इशिता, फाइन, राइट. सो हॉफमैन कम्स वेन एवर टू कंडीशंस. Sedgeff, more substituted alkene is the product. Hoffman, lesser substituted alkene is the product. So completely opposite. Hoffman किस चीज में, किस कंडीशन में आना है क्या? सिर्फ दो कंडीशन, तीन कंडीशन है. वन, लीविंग ग्रुप इज अ पुअर लीविंग ग्रुप एंड बेस इज बल्की एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीट में नहीं है, सिर्फ IIT में है. सो ये दो चीज आपके ख्याल में रखो. पहला ये लीविंग ग्रुप इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, दूसरा ये बेस इज बल्की. सो दिस इज अ बल्की बेस. वेन एवर दिस कम्स ना, आप हॉफमैन इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है बेटा, चलो फाइन. यू नो हॉफमैन आल्सो. रिवाइज अल्कीन्स. सो अगर डाउट है ना तो एक बार पूछना, राइट. सो रिवाइज इट एंड कमेंट बॉक्स में डाउट डालना यार, एंड द प्रीवियस रिप्लाई में भी एक बार कमेंट डालना, आप देख ना सकता हूं, राइट. चलो, राइट. सो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन. ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो एलिमिनेशन प्रेफर करना है. एंड मिस्टर शॉर्ट्स, गुड आफ्टरनून. एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर्स SN2 रिएक्शन. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गो बोथ SN2 एंड एलिमिनेशन भी कर सकते हैं.
and depending upon the strength of nucleophile, a tertiary alkyl halide undergo SN1 and elimination depending upon the stability of carbocation. हमेशा SN1 वर्सेस E1 का कंपटीशन होगा एंड SN2 एंड बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन का कंपटीशन होगा. सो मैं क्या बोलना चाहता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन competes with the elimination reaction. So let us say आगे बढ़ने, reaction with metals. In the reaction with metals you can see Wurtz reaction. What is Wurtz reaction? When alkyl halide react with sodium metal, you got alkane. That is Wurtz reaction. We discussed it long back in the alkane reactions. Ishita, good afternoon here. Mr. Shorts, आपका शुभ नाम है क्या बेटा? Right. And इसका बाद जो ये Wurtz reaction, Fittig reaction, Wurtz Fittig reaction, Ullmann reaction, सब इसका अंदर आ जाएगा. So I don't want to discuss those. And one more thing is reaction with magnesium. In the reaction with magnesium, you can see you are going to see Grignard reagent. Victor Grignard made this reaction. Alkyl halide react with magnesium in dry ether to give rise alkyl magnesium halide. This is called Grignard reagent. Victor Grignard got Nobel Prize to make these reagents. अरे ये सिर्फ ये रिएक्शन के हिसाब से एक आदमी, एक इंसान नोबेल प्राइज बनाएगा. Yes, why it is? Grignard reagents are great nucleophiles and excellent bases. Grignard reagent, okay, RMgX. X is equal to chlorine, bromine or iodine, है ना? So this is equal to R minus Mg plus. Whenever this Grignard reagent comes into our mind, आपका ख्याल में आना, this is a good nucleophile and excellent base. Excellent base. So that it can react both acid-base reactions, both nucleophilic reactions. Remember, so acid-base reactions I discussed, NeH plus ion donor can form an alkane, and you can see nucleophilic reactions, carbonyl compounds, when Grignard reagents are added, you are going to form primary alcohol, secondary alcohols, like that. Remember, and tertiary alcohols. We discussed in alkanes in Grignard reagents as well. Right, beta? In the organic conversions. एक चार्ट भी दिया. 2 sessions we discussed organic conversions, Grignard conversions we discussed. If you want, I am going to run a special session with Grignard reagent. Whenever you want, you tell me, I will make a special session on the Grignard reagent. Grignard synthesis होगा. The session name is going to be Grignard synthesis. अच्छा, title इशिता, Grignard synthesis. The title ठीक है आपका? और एक टाइटल आपको प्रपोज करना है तो चार्ट बॉक्स में डालो. सो आई विल शेड्यूल ए क्लास विद द टाइटल गिवन बाय माय डियर स्टूडेंट्स. एनी टाइटल रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको ये मंजूर है, कर सकते हैं. राइट है ना? राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विथ मेटल्स. रिएक्शन विथ लेड एंड सोडियम एलॉय. lead and sodium alloy. So in the presence of ether, okay, lead is going to react with ethyl chloride. You are going to get tetraethyl lead. This is what you call it as tetraethyl lead. So this tetraethyl lead is used in the petrol. It was used, okay, almost since 20 years it is not used. We are using non-leaded petrol or unleaded petrol in the petrol bunk. That is ordinary petrol, you say, right? So this is used as anti-knocking agent. What is knocking and anti-knocking? We just see in the alkanes and the petrochemicals at the end of the alkanes uses. Reaction with zinc. So reaction with zinc is going to reduce the alkyl chloride to corresponding alkanes. So they are going to see the coupling C2H5
and 2 moles of this zinc chloride is removed, so it is going to get a couple, just like your Wood's reaction. Okay, this reaction आपका नाम पता है, आपका नाम पता है? Yes, anybody can give the name of this? There are 500 students are there in the current concurrent viewers right now. Okay, come on. What is the name of the reaction? Alkane में बता चुका मैं. Ishita, it is Franklin reaction. This is what you call it, the Franklin reaction, है ना? So सब चीज याद रखना बेटा. I am not looking at anywhere. I am telling all these reactions. I am just looking at the screen and watching the chart records over there. That's it. Okay, that much confidence I have with my experience, my students. With my experience, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा स्टूडेंट्स को कुछ भला करने का कोशिश कर रहा हूँ. आपको अच्छा सोचो, आपको भला होगा. ठीक है? Right. That's good, Richa. Reaction with lithium. Lithium is going to react with alkyl chloride. It is going to give alkyl lithium. This alkyl lithium is going to be a good base rather than a nucleophile. It is going to be a good base rather than a nucleophile. है ना बेटा? Right. So, reduction. So, alkyl halides, when it is reduced, it is going to give rise alkane as a product. So, ये reduction करने के लिए क्या reagent आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक इन एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा. ओके, जिंक इन HCl इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा. लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं. सोडियम बोरोहाइड्रेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो मेनी रिड्यूसिंग एजेंट. HI इन रेड फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं. रेड फास्फोरस, anything can be used for this reduction process. Keshav, ओके क्या बोलना चाहता हो केशव? क्या बोलना है बेटा? बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, मेरे वीडियो दिख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं ना? ओके, कुछ डाउट है ना तो पूछना बेटा. केशव, ओके, दैट्स गुड. आगे बढ़ना. सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. सो बेंजीन का जो रिएक्शन है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन alkyl halide. You can see benzene. This is your benzene. Let us say alkyl halide CH3Cl in the presence of AlCl3. You are going to get alkyl benzene, right? So it is going to be Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts alkylation also you can say. Okay, right. Fine, beta. So optically, the optically inactive compound among the following. अभी तो नीट का क्वेश्चंस चल रहे हैं, नीट का MCQ, right? Okay. So optically inactive compound among the following: 2-chloropropanol. So propanol. This is propanol. 2-chloropropanol. So that it is chiral. So हर चीज का ऐसा ढूंढना है. 2-chlorobutane. So what is this 2-chlorobutane? This is 2-chlorobutane. And this is your chiral center. जहाँ पर chiral center है, red star, that is optically active. Okay. And 2-chloropentane. This is your 2-chloropentane. देखना. So this is 2-chloropentane. This is also having chiral center. Then 2-chloro-2-methylbutane. What is this 2-chloro-2-methylbutane? So this do not have the chiral center. Answer is going to be 4. You can see it. Are you getting or not? Yes, very good, Ishita.
सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 2 बार आ चुका नीट एग्जामिनेशन में। हर ऑप्शन का आप पकड़ के एक बार स्ट्रक्चर बना के देखना कायरल सेंटर है नहीं है। अंडरस्टैंड? राइट ऋषा, फाइन, वेरी गुड। सो अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, हमारा जो ट्रिक है ना, बोलो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ऑक्सीजन, सल्फर, ओके, नाइट्रोजन और कार्बन एंड आयोडीन। सल्फर का कम है, ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। राइट, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। आर यू गेटिंग और नॉट? इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक ही ट्रिक इस्तेमाल करके आप सीधा आंसर दे सकते हैं। जो भी आईआईटी है, जो भी नीट है, ये मेथड, ओके। और अदरवाइज आप रट्टा मारना, रट्टा मार के याद रखना। What's the guarantee that during examination the by-hearted stuff should properly recalled? ये गलत बात है। ये ट्रिक याद रखो, ये ट्रिक इस्तेमाल करो आराम से। सो राइटिंग एग्जामिनेशन इज नॉट ए टेंशन का बात नहीं बेटा, फील लाइक ए फेस्टिवल है। ओके, एक किसान है ना, साल भर करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब हार्वेस्टिंग जो होता है ना, ये फेस्टिवल होता है। सो यू स्टडी योर प्रिपरेशन, साल भर करो, मेहनत करो, जो एग्जामिनेशन वक्त में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का जैसा आप एंजॉय करके आना। सो अभ्यास करने के वक्त में यही है ट्रिक। ऐसा ट्रिक्स आपके कलेक्ट करके याद रखना। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, फाइन। जो भी सब्जेक्ट है ये मेथड इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2। सो जो भी SN1 है, SN2 है, फॉर बोथ SN1 एंड SN2 आपका बोलना चाहता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन फ्लोराइड्स। सो ये ऑर्डर का हिसाब से आपका आएगा ऑप्शन 4। अंडरस्टैंड इशिता? फाइन, ग्रेट टू सी दैट यू गिविंग गुड क्वेश्चंस, गुड आंसर्स। Very good, very good. Now, so which of the following is correct or decreasing order of SN2? So फिर भी एक ट्रिक है, हर क्वेश्चन के एक ट्रिक होता है। जहां पर SN2 आ रहे हैं ना, मेरा ट्रिक क्या बोला? स्टेरिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक। जहां पर बल्कि ग्रुप आता है ना, ये कम रिएक्टिव है। सो प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी, है ना? दैट्स गुड। सो हियर इट इज primary, this is secondary, and this is your tertiary. So that I just want to give 2. अरे सिर्फ देख के आंसर दे सकते हैं ना? फाइन, यू ऑल एंजॉइंग दिस क्वेश्चंस? एक बार फायर इमोजी डालो चार्ट बॉक्स में। यस, फायर इमोजी कहां? राइट राइट राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार लाइक भी मारना। Oh, very good. So tertiary alkyl halides are practically inert for substitution in SN2, क्योंकि स्टेरिक अगर ज्यादा होगा, SN2 कम होगा। यही है आपका ट्रिक है। ये ट्रिक का हिसाब से tertiary alkyl halide practically not reactive, inert means not reactive, क्योंकि इसका स्टेरिक इंडरेंस ज्यादा है। ये tertiary alkyl halide means CH3, CH3 एंड CH3, जो मान लो हैलोजन क्लोरीन है। सो इसका इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप है ना, जहां पर बड़ा अल्काइल ग्रुप है, स्टेरिक इंडरेंस ज्यादा होता है। रुशन कुशलवा, राइट? सो आंसर 4 इज करेक्ट वन। ओके, वेरी गुड, नाइस। हियर वन मोर। In polar solvents, which of the following representation correct order of decreasing nucleophilicity? Decreasing nucleophilicity, polar solvent का आप कर सकते हैं। So you can directly say methyl. Here, if it is sulfur, you simply look at the electronegativity, you will understand. Fine. प्रजापति नमस्ते, रुक्षन
Rushan, come on. So talking about aryl halides. So कम से कम प्रिपरेशन देखना है. ओके, प्रिपरेशन के बाद थोड़ा सा रिएक्टिविटी भी देखना है. लेट अस लुक एट aryl halide. Aryl halide means aromatic halides. जहां पर हैलोजन बेंजीन रिंग का सीधा लगा हुआ, that is called aryl halide. अब बोलो CH2Cl and this is, do you call this is a aryl halide? This is not aryl halide. Mind it, this is not aryl halide. Aryl halides are also said to be haloarenes. So both terminologies are accepted. Okay, so not aryl halide क्योंकि halogen बेंजीन का डायरेक्टली नहीं लगा हुआ, so that it is simply benzyl halide. ठीक है, so उसमें आगा क्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, ओके, 1-bromo-3 क्लोरोबेंजीन IUPAC नाम का हिसाब से, right? Now let us see the preparation of aryl halides. Direct halogenation कर सकते हैं बेटा, right? Direct halogenation when benzene is treated with chlorine in the presence of FeCl3 or AlCl3, any Lewis acid, you are going to get a chlorobenzene. So here FeCl3 or AlCl3 you can use. It is called Lewis acid. It is a halogen carrier. We already seen these particular reactions in the benzene golden reactions. What are benzene golden reactions? Halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. ये पांचवा reactions ख्याल में रखो, कहीं भी कर सकते हैं. प्रजापति correct, Ishita right. So iodides are not formed in this way, as HA is a strong reducing agent. By using ICl is interhalogen compound, one can get iodobenzene. It is a peculiar reaction. Interhalogen compound P block NCRT part 2 उसमें आ जाएगा. ICl is more reactive than I2. ठीक है, right? So diazonium compound, जहां पर this aniline है ना, this aniline एक बार थोड़ा सा reduce करके, okay, so this is aniline treated with NaNO2 and HCl 0 to 5 degrees of HNO2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि this is unstable. So that in C2 you have to prepare. In C2 means the reaction is added, the reaction mixture. So the particular compound is prepared within the reaction mixture is called in situ. Okay, so it you are going to get benzene diazonium compound BDC, and when it is treated with Cu2Cl2 you are going to get chlorobenzene. And can you say this reaction? इसका नाम क्या? ऋषा, इसका नाम क्या? Yes, Sandmeyer reaction है ना? So like that you have Gotterman reaction. Okay, I have given this. Iodobenzene is reacted when benzene diazonium chloride सिर्फ Ki से react करने तो iodobenzene मिलेगा. इसका कुछ नाम नहीं है. Okay, when you treat the aniline, okay, so I'll just talk about it. You are going to get benzene diazonium chloride, right? This benzene diazonium chloride is treated with HBF4. You are going to get N2BF4. If you simply heat it, you got fluorobenzene. That's what you want to say. The entire reaction is known as Balch-Schmann reaction. Balch-Schmann reaction. ये बाल्ज-शिमैन रिएक्शन है, लेकिन इसका नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन ये नाम याद रखना अच्छा होगा, नीट एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा आपका, राइट?
So Prajapati, you need not have to retract the messages, that you can really enjoying your class. Thanks for your compliments. Okay, right. So commercial preparation, benzene, okay, is treated with HCl and O2. It is going to give rise to chlorobenzene rashing process. This process you call it as rashing process. This process you can say it is a rashing process. Now from the benzene diazonium chloride और एक बार clear slide आपको दे रहा हूँ. Nitrobenzene is subjected for reduction. आप reduction करने के लिए SnHCl इस्तेमाल कर सकते हैं, FeHCl इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, so you can see aniline is formed. When aniline is treated with HNO2 or NaNO2 in HCl, gives rise benzene diazonium chloride. जो benzene diazonium chloride sand में reaction Cu2Cl2 से react करने तो chlorobenzene मिलेगा. If it is reacted with CuHCl से reacted, if it is ये दोनों का क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही है. Cu2Cl2 इस्तेमाल कर रहे हैं. Cu2Cl2 अनस्टेबल है क्योंकि ये कॉपर पाउडर इन HCl सीधा ऐड कर सकते हैं, तभी आपका बोलेंगे गैटरमैन रिएक्शन. इफ नॉट दैट इज अ सैंडमेयर रिएक्शन. वी आर वांट रीनीट. ओके, पहले हम रास्ता रोको करने हैं क्या, कोई सुनने वाला नहीं है. ओके, एंटायर इंडिया आग लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है. सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, सो जो आने दो, जो करने दो, छोड़ दो. So we all stand here for our sincerity and we prepare for the best for the examination. So if re-NEET is there, we prepare there. If re-NEET is not there, अगले साल को prepare करना है. So सब करने के हम तैयार हैं. Yes, thus if they conduct re-NEET, if they don't conduct re-NEET, we don't know and we are not ready also. Okay, if you do anything also, they are not in a position to listen. So what we do, we just get ready for ourselves. If NEET is conducted, we will write it. If not, get ready for the next NEET Step Up 2025. Ready? Fine. Thank you. Very good. Hold on. Now let's see physical properties of aryl halides. Okay. So talking about physical properties, 1 minute. Right. Thank you so much. Love you all, my dear students. My beloved students, physical properties. Aryl halides are also like alkyl halides, but they are all liquids, whereas alkyl halide initially छोटा मोटा पहले जो ये methyl chloride, ethyl chloride gases है, यहाँ पर सभी liquids है with pleasant smell. The boiling point of aryl halides follows the order. Alkyl iodide is greater. Iodobenzene greater. Bromobenzene greater. Chlorobenzene, it is directly proportional to molecular weight. Who asked you to memorize all these things? Right? Simple thing. Simple thing. Right? Okay. Now, the melting point of the para isomer is more than that of respect to ortho and meta isomers. Right, beta? All right. So, suction reactivity of halides and vinyl halides, aryl halides and vinyl halides. Chlorobenzene, the chlorobenzene here you can see.
Yes, it is. This is the chlorobenzene, and if you see the chlorobenzene, its resonance structures are given as you can see. The lone pair of electron present on the chlorobenzene comes in this way, so that there is a negative charge over here. And this chlorobenzene is participating in resonance, so that you are going to get this. And this is going to participate in resonance, you are going to get the structure 4. And again this is going to give the structure 1. So structure 5. So in this structure 1 and the structure 5, dono barabar hai, both are same, right? So when you see this carbon to chlorine benzene is having double bond character, so the resonance hybrid is going to be like this. Due to this double bond character, they are reluctant for nucleophilic substitution reactions. Haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reaction. Also vinyl halides. Vinyl halide means you see this lone pair on the chlorine comes over here, so that there is a resonance hybrid. So CH2 and CH and Cl, partial positive charge and a negative charge. So there is a double bond character. Due to this double bond character, both vinyl and aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction. मान लो ये nucleophilic substitution reaction SN1 हो सकते हैं, SN2 भी हो सकते हैं. So it can be SN1 or SN2, right beta? Now therefore atoms, just take a chlorobenzene, you just take alkyl chloride in the aqueous sodium hydroxide, nucleophilic substitution reaction takes place. ये reaction होगा, ये reaction नहीं होगा, क्योंकि haloarenes do not participate in nucleophilic substitution reaction due to resonance that I have shown in the previous slides. That's important. That's very important. You know, that's very important. So this could, however, be achieved by undergoing vigorous conditions. Vigorous conditions. You just see reaction, nucleophilic substitution reaction, SN aromatic, nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution aromatic. Okay. Now we have nucleophilic substitution reactions, electrophilic reactions, miscellaneous reactions. Let us talk about vigorous conditions. Chlorobenzene undergoing aqueous potassium hydroxide vigorous reactions to give rise, followed by acid treatment, you got phenol. है ना बेटा? So entire class kept quiet. You just keep charting here, my dear students. So within next 10 minutes the class is going to be completed. So एक बार thumbs up emoji डालो, thumbs up डालो, right? So this is a nucleophilic aromatic substitution reaction. So in this reaction, so if you have ortho and para positions, a strong electron withdrawing group like nitro, so nitro group is present here, so that para positions, the reaction taking place, observe 443 Kelvin में हो रहा है. If you have at ortho as well as para, इसमें कम टेम्परेचर में कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना. इफ यू हैव ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन, अरे थोड़ा सा वार्म करने तो प्रोडक्ट मिल रहा है. सो number of electron withdrawing groups present on ortho and para positions makes this aromatic nucleophilic substitution reaction more easy. Prashant, that is the way of understanding these three reactions. ये snap आपसे सीधा NCERT से निकाल के यहाँ पर छिपा दिया मैं. So we have to read NCERT like a Bible or Quran or Gita. So according to your custom you can name it. So here अगर आपका नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन में होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि whenever this electron withdrawing group is there, nucleophilic substitution reaction में जो
इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं ना, ये स्टेबलाइज करने का आदत चलेगा आपको. सो दिस इज गिवन एज, अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा OH माइनस ए काटेंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं ना, यस इट इज, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं ना. ओके, सो दिस इज अगेन कम्स टू हियर, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ सकते हैं, यहां पर भी आ सकते हैं. सो इफ नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, ये स्टेबलाइज कर सकते हैं. इफ नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट, स्टेबलाइज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, ये भी स्टेबलाइज कर सकते हैं. यही लॉजिक, सिंपल लॉजिक. बड़ा बड़ा मैकेनिज्म देख के आपको ढूंढना चाहता हो तो दिमाग खराब हो जाएगा बेटा. सिंपल ऑब्जर्वेशन, एज नाइट्रो ग्रुप नंबर बढ़ रहा है, कहा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में रिएक्शन आसान बन रहा है. दैट इज द लॉजिक, यू कैन यूज द ट्रिक. सो रिएक्टिविटी in nucleophilic substitution reaction is directly proportional to number of electron withdrawing groups at ortho and para positions. बस इसका एक नोट भी दिया, मेटा में ये ट्रिक नहीं चलेगा. ठीक है बेटा, वेरी गुड टू सी, नाइस. एक थम्स अप, फायर इमोजी डालो यार. आपका सेशन में जोश उठाने की कोशिश करो, जोश उठाने की कोशिश करो. सो आई जस्ट वांट टू सी दिस सेशन एट द वीकेंड विथ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, लॉट ऑफ इंटरेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. सो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका जो जो कंडीशंस दिया, ये कंडीशंस का रीजन भी दिया है ना. दैट्स वेरी गुड. एंड अगले सेशन में वी आर गोइंग टू कंक्लूड विथ सम मोर क्वेश्चंस with this aryl halides, and we start with alcohols, phenols, ethers directly. Today we had a great spell with my lovely students Rushan, Ishita, Richa Sharma and Saeed. Okay, so many students, I can't pronounce everybody's name right now. So alkyl halides SN1, SN2 and elimination, SN1 SN2 बीच में, एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बीच में, एंड aryl halide इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्टिविटी and the conditions for the reactivity we'll see, and we will be continuing this particular end of this particular topic in the next session, in the next Thursday, and get ready with quantum mechanics on Monday. My dear students, here Suresh Avari from Infinity Learn signing off with lot of thanks, and bless you all my dear students. God bless you. Thank you very much. See you. Bye bye.